Everyone and welcome back to the new video this channel. So today in this video we will be discussing about character arrays and strings. So let's start the discussion. So after this video, we will do some basic questions of string and arrays, character arrays also. But in next video we'll do some advanced question based on character arrays and strings. So let's discuss about the character arrays and strings. So first thing that comes in our mind is what is character. Like we know all about the integer. If we fix the value of integer like integer a equals to 5, so it means the value of a equals to 5. But in characters, how we will give the value to a particular character. So if I want to give a value of a equals to z, so it is a is a z, a is a character type. So the type of a will be character. So char a equals to z, it means the value of a is z. Initially we can only put a single value in character. Like this in integer type also we can only put the single value in integer, like integer a equals to 5, so it means value of a equals to 5. Only one value we can put. And we know about the array also, integer array. In integer array we put some integer values in multiple integer values in one array. So you can see string in C++ is basically one dimensional character array. So string, we can put multiple characters in string. If we want to put multiple characters, so that is called a string. So how, now let's discuss how we can take the input in character array. Now we know how to initialize the character array. Char name equals to 20, sorry, char name of 20 size. So it means a name character type का array है और that size is 20. So now we are taking the input cin of name. Cin of name, it means like we are taking the input of character type. So we are taking like bubber, you can see here, like bubber. And after this we will use a sign. This sign is basically a null character. This is showing a null character. Like we are putting some characters here, b a b b a r, and after this we don't want to put any character. So after this अपने आप ही एक null character put हो जाएगा वहाँ पे. Null character is showing like we are stopping here. We don't want to put we don't want to put multiple characters, so it is a terminator basically. So we have to add the null characters this after the string stops or string ends. So use as a terminator, it is used as a terminator, जिससे मुझे पता लगे कि कहाँ पर मेरा वो स्ट्रिंग का कैरेक्टर एंड हुआ है. ठीक है. सो इसको इनपुट कैसे लेंगे, सी इन नेम करके. लाइक वी आर टेकिंग द इनपुट लाइक लव, you can say love. Then after this null character will be there because now we are stopping here. Love is there and now we are stopping. So we want to stop, but the null character is showing like we are stopping here. So no need to put extra characters, we can put but in next execution. So c out of name is showing like we want to print the character here. You can see here yeah. So let's do the code, and by doing the code we'll think much better. We want to firstly create a character array. Like how we can initialize the character array. So let's initialize this. So firstly what we can do is char name of 510. So here what it is showing, like we are creating a array that type is equals to character type and that size equals to 10. Now what we can do, we can take input like firstly enter your name, enter your name. इट इज शोइंग लाइक यार वो तुमसे नेम पूछ रहा है कि नेम एंटर कर दो. ठीक है. सो हम नेम को इनपुट ले लेंगे सी इन ऑफ नेम. ठीक है. इनपुट ले लिया. नाउ अब मेरे को क्या करना है कि यार मेरे को इनपुट ले लिया पर मेरे को प्रिंट भी करना पड़ेगा. तो सी आउट योर नेम इज नेम एंड देन. सो ये तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा नेम को प्रिंट कर देगा. नाउ लेट्स execute it and see if this will work or not. You can see here it wants to take the input of a character array. We can take input. So
Now, like I want to write Bhavishya. So let's run this, and your name is Bhavishya. So let's give a space also so that it will look good. Now again, let's run this. My name is Bhavishya, तो इस पे your name is Bhavishya. So it is working like this कि मेरे को भविष्य नाम प्रिंट हो रहा है. But here now you can see if I want to write Babba, but BA, then I am using a null character. Then I am using a null character. So it is same like this. If I want to write like if name of two is equals to null character, it is showing a null character. So now what should be printed here? Like if I run this and yeah, Bhavishy. So what should be printed here? I think it should print like BH only. BH0. Oh, sorry. We have done a mistake. It null character. This should be there. So now let's again run this because that is showing a 0. You can see here your name is BH only because you can see name of two second index और मैंने एक null character को मतलब रखा हुआ है. ठीक है, मैं लिख रहा हूँ BHABISHY बट मैंने सेकंड इंडेक्स पर null character को डाल दिया है. अब मैंने बोला था कि null character जहां पर भी आएगा it means that is showing the stop execution sign. So here you can see if I use this null character here, so only BA will print, other string or other remaining string will not print. So that's why it is showing like only now we have to stop here. Name of 2 equals to null character. It is showing now we have to stop here. So that's why we are using this null character so that BH will print. So that is the use of null character. Now we will do some questions like basic questions. So first question is length of the string. So how we have to find, how we want to, if we want to find like length of the string, so how we can find the string, the length of the string. So it is very simple to find the length of the string. So you can see here if we are using we are taking a string which is bubber, BABBAR. So the you can see the length of the string is 6. So how we will find, we will just traverse this string. You can see here 0th index, first index, second index, third index, fourth index, fifth index. Now we are occurring, we are tracking a null character. So null character where we have to find, like if null character is there, so we know that if null character is there, it is showing the stopping sign, like we have to stop here. So whatever number of characters are there, like 1 2 3 4 5 6, so 6 characters there. So we have, in this I have to print 6 here. So now let's create a function int get length. This get length function is showing like that will give me the length of the string. So in this I have to pass char ch. मैंने एक डाल दिया. ठीक है, सी एच मेरे को यहाँ पे साइज डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैरेक्टर में साइज डालने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, नाउ सी एच लिख दो, कुछ भी लिख दो, इसको नेम दिखाया ना हमने यहाँ पे, तो नेम लिख दो. ठीक है, नेम लिख दो. अब मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्ट इक्वल टू 0th इंडेक्स. ठीक है, और इसको लिखने की ये वैसे भी जरूरत नहीं है, सीधे काउंट को लिख सकते हो. ठीक है, int count equals to 0 and we can apply a loop for int I equals to 0 to I equals to 0. कब तक मेरे को रुकना जाना चाहिए, जब तक कि नेम ऑफ I नॉट इक्वल्स टू नल कैरेक्टर, जब तक कि नेम ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर है तब तक के लिए लूप चलेगा. एंड आई प्लस प्लस एंड सिंपली इंक्रीज द काउंट and that will return me a count. So return count. So now let's find out the size of the string. So see out size of your string is, basically now we have to find the size. So get length of
name, and so now let if I run this code, so मैं एक इनपुट दे रहा हूँ भविष्य, so size of the string is 2 here, because you can see here we are, मैं क्या कर रहा हूँ कि नेम ऑफ 2 की जगह नल कैरेक्टर डाल लगा हूँ। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, अभी कमेंट आउट कर देते हैं, बिकॉज अब मेरे को पूरी साइज चाहिए, ठीक है। तो साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज, योर नेम इज भविष्य, साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, now it is working। and but if I comment out this like name of 2 equals to null character, so second index पे null character पुट कर दिया, तो मेरी अल्टीमेट स्ट्रिंग कौन सी बन गई, bh बन जाएगी। यू कैन सी हियर अल्टीमेट स्ट्रिंग कौन सी बन गई मेरे पास, bh बन गई, और bh का साइज कितना है 2, तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग 2। सो ये हो रहा है इसमें, ठीक है। नाउ वी नो हाउ टू प्रिंट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज reverse a string, so in this I have to reverse a string, so how we can reverse, if मेरे पास string दे रखी है बब्बर नाम से, BABBAR, ठीक है। आंसर आफ्टर रिवर्स, रिवर्स क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर एंड में आ जाएगा, फर्स्ट कैरेक्टर क्या आ जाएगा एंड में आ जाएगा, और लास्ट कैरेक्टर क्या आ जाएगा फर्स्ट में आ जाएगा, लाइक वी हैव टू रिवर्स दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, सो इट विल बी RABBARAB, सो मतलब उसको रिवर्स कर देंगे स्ट्रिंग को। तो इसको कैसे करने पड़ेंगे, so in this what I have to do is basically simple चीज ये है, I will take 2 pointers। First thing is, first approach is I can create a new string, and in that string I can print the characters from the end, and second, that is not an optimal approach, but the second approach is I can use 2 pointers। First pointer is at index 0 and last pointer is at index n minus 1, and we will swap those indexes, the value of those indexes, like we will swap firstly r and b, and pointer will increase, ith pointer will increase, and jth pointer will decrease. Then again I can swap these two elements, then again I can swap these two elements, so ultimate string will be RABBAB। so now let's create a function also for this, so void reverse string, so in this I have to pass a array char name of size and int n is showing the size of the array। now we have a size of the array, that because we have a get length is showing the size of the array, so in that what I can do is I can use 2 pointers like int I equals to 0, like we can say int start बोल सकते हैं, start equals to 0, int end equals to n minus 1, ठीक है। now we can apply a loop while start is less than equals to end, जब तक start less than equals to end है तब तक के लिए मेरे पास लूप चलेगा, और लूप के अंदर क्या हो जाएगा, स्वैप हो जाएंगे एलिमेंट्स, सो स्वैप ऑफ स्टार्ट ऑफ आई, सॉरी it should be name of start, अरे यार, name of start कॉमा name of end, ठीक है। इन दोनों एलिमेंट्स को मैंने स्वैप करा दिया। नाउ आई हैव टू इंक्रीज द पॉइंटर, सो हियर आई कैन इंक्रीज n minus minus, and it will give me a reverse string। so if I want to reverse the string, so we can take like int len equals to get length of name, length, अब मेरे पास len is showing the length of the string name। now we have to reverse the string, so cout after reversing your string, so मेरे को फंक्शन कॉल पड़ेगा reverse string, and in reverse string I can pass name and size comma len, and yeah, it is done, and after this I can write like end l। so if I run this, and what is the problem here, cout after reversing your string,
So invalid operand basic char type. Okay. Hmm. Yeah, that is perfect. Name, comma, length is showing this. Int length equals to get length of this. See, after reversing string, your new string, ठीक है, your new string and size of ठीक है, नहीं वो सो गया होता है तो ठीक है. Hmm. So rather than doing this thing, what we can do is we can simply do this thing. Firstly, we can make a function call like this, and then here the function call is this, and now we can take like see out after reversing your string. New string will be new string is name. जो string है उसको call कर देंगे name, and that is my string. If I run this and see if this will work or not, now it is. Now the which say string, your name is BH. Let's say comment this and then again run this. BH VISHY. Sorry. Yeah. Your name is Bhavishy. Size of the string is 8. After reversing your string, new string will be I yes. Why it is printing like this? Let's again run this. VISHY. ठीक है. हाँ हाँ अच्छा गैप नहीं दिया ना मैंने. ठीक है यहाँ पे गैप और दे दूँगा. ठीक है. हम्म. अब अच्छा दिखेगा ये. ठीक है. आफ्टर रिवर्सिंग योर स्ट्रिंग न्यू स्ट्रिंग इज YSHIPABHB. ठीक है. इसको जस्ट रिवर्स जो इस रिवर्स स्ट्रिंग है वो प्रिंट हो रही है. ठीक है. यहाँ तक मेरा अच्छे से वर्क कर रहा है. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज check if the string is palindrome or not. So palindrome, what is palindrome? Firstly, we have to know what is the definition of palindrome. So palindrome of the string is like if you have a string and you have a reverse of that string. If the original string and the reverse string is same, then it is a palindromic string. So you can see the example ABCBA. After reversing, what we will get ABCBA. It is both strings are same. Original string and the reverse string, both strings are same. So that's why it is a palindromic string. In that case, we have to return true. Otherwise, we will return false. So here the first approach is we can find we have a original string and we can find a reverse string and we can compare both strings like these strings are equal or not. So that is in that we are taking the extra space of reverse string. So because we are creating a reverse string, so that's why we are taking a extra space, but we don't want to take the extra space. So the next approach is what we can do is we can take two pointer approach, like we can use two pointer approach. We can start is at index 0 and index n minus 1, and we can compare first and last elements. If first and last elements are same, again we increase the ith pointer and decrease the end pointer. Then again we'll compare both values are same or not, what characters are same or not. Then again what characters are same or not. If we have find out like string of start is not equal to string of end, if that occurs, so in that case I'll return 0. It means return false because the characters of start or end not equal. So that's why we have to return to 0. Otherwise we'll continue and finally we return true. So let's then again let's do the code for this also. So what you can check like a bool is palindrome drum, and in this what I can pass, I can pass my char name and also length of the string. ठीक है. Now we can take two pointer int start equals to 0 and int end
equals to n minus 1, and we can apply a loop while start is not equals to n. Start is less than equals to n, sorry. And we can check, we can swap the elements. स्वैप, सॉरी, स्वैप करने की यहाँ जरूरत ही नहीं है, मेरे को जस्ट चेक करना है कि एलिमेंट्स आर सेम और नॉट. इफ नेम ऑफ स्टार्ट इज नॉट इक्वल टू नेम ऑफ एंड, अगर मेरा स्टार्ट वाला एलिमेंट और एंड वाला कैरेक्टर दोनों सेम नहीं है, इन दैट केस आई कैन सिंपली रिटर्न जीरो, फॉल्स. अदरवाइज वी कैन इंक्रीज स्टार्ट पॉइंटर एंड डिक्रीज द एंड पॉइंटर. ठीक है. So that this is the palindromic function. Now we have to check, we can take a example like if this is equal or not, if this is equal or not. So it, let's take it. Hmm. So let's do the function call. So function call is very easy. This is my reverse string and दिस इज माई पैलिंड्रोमिक फंक्शन. ठीक है. अब मेरे पास पैलिंड्रोमिक फंक्शन पड़ा हुआ है. ठीक है. ये चेक करेगा कि स्ट्रिंग मेरे पास पैलिंड्रोम है या नहीं. ठीक है. तो इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इसको एक स्ट्रिंग में पुट करना पड़ेगा. लाइक मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, उसमें मैंने साइज निकाल, उसको प्रिंट करा लिया, साइज निकाल लिया, रिवर्स भी फाइंड कर लिया. अब मैं चेक करूंगा कि यार इफ मैं डायरेक्टली एक फंक्शन यूज करता था, इज पैलिंड्रोम ऑफ नेम कॉमा एन. अगर मेरा पैलिंड्रोम है तो मेरे को ये प्रिंट कर देगा या यू आर करेक्ट, यस इट इज पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग. अदरवाइज in else condition see out no. So now let's again run this. So ये n नहीं, ये लेंथ होना चाहिए था बिकॉज यहाँ पे लेंथ पास कर रहे हैं. ठीक है. सो इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, लिखते हैं BHABISHY. ठीक है. योर नेम इज भविष्य, साइज ऑफ द स्ट्रिंग इज ए, ये रिवर्स है. ठीक है. बट यहाँ पे मेरे को प्रिंट नहीं हुआ नो, बिकॉज यहाँ तो नो प्रिंट होना चाहिए था, बिकॉज इट इज नॉट yeah, it is printing no. So let's say end l. Then again, now let's take a palindromic string. The example of the palindromic string is ABA, ABCBA. ABCBA को लेते हैं. ठीक है. ABCBA. ठीक है. Your name is ABCBA. Size of this is 5. Reverse of this is ABCBA. But it is printing no. But it should print yes. So let's see what is the problem here. N minus 1 start is not equal to end. If name of start is not equal to name of end, return 0. Otherwise start plus plus end plus plus. After that we can return 1. Now let's take other A B C D A. या यस इट इज पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, बिकॉज यहाँ पे मैंने रिटर्न 1 नहीं लिखा था ना, इसलिए. ठीक है. या इट इज पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग. सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल नून. या सो गेट इट इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग. तो कोई एक अनदर स्ट्रिंग लेते हैं लाइक रोहन. रोहन इज नॉट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बिकॉज इट फर्स्ट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू लास्ट कैरेक्टर, वहीं खत्म हो गया फंक्शन मेरा. सो इट इज प्रिंटिंग नो. So in this video what we learn about like we know how to find the size of the string, then how to reverse the string, then again how to check the palindromic string. In this the advanced version of this palindromic is, अगर मेरे पास अपर केस और लोअर केस दोनों केस सेंसिटिव हो, बेसिकली अपर केस और लोअर केस दोनों को अलग अलग मानना हो. हियर upper case and lower case I think same, like you can check like yeah here upper
केस एंड लोअर केस इज नॉट सेम, बट अगर ये केस सेंसिटिव हुआ, ठीक है, तो मेरे को चेक करना पड़ेगा। अब मेरे को एक वर्जन वो भी बनता है कि अगर मेरे को कैपिटल एन एंड स्मॉल एन दोनों को सेम मानना है, तो मेरे को कोड में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है, बट मेरे को एक फंक्शन बनाना पड़ेगा टू लोअर केस नाम से, ठीक है। दैट फंक्शन आई विल मेक इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू सम एडवांस क्वेश्चन आल्सो बेस्ड ऑन स्ट्रिंग। सो तब तक के लिए बाय।